I would like to start with Hazrat Sulaiman alayhi salam and nation of jinns. When you talk about Sulaiman alayhi salam and you don't talk the story of jinns, it feels that you have left your talk incomplete. Yes. Something is missing in this story. So that's why when we talked about Hazrat Sulaiman alayhi salam, we felt, we should bring up the story of jinns as well to complete the subject. Is it possible that a human being can see a jinn? It's not possible for normal people, but for Anbiya, it is possible to see jinns in its original and asl condition and state. हजरत सईद बिन जुबैर ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त पर बैठते थे तो उनके इर्द गिर्द 400 कुर्सियां हुआ करती थी. If you will share about this. जी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात और उसकी सिफात की जो कसम होती है वही शरई कसम होती है. लेकिन जिन्नात का मामला जो है कुछ इस तरह से, क्योंकि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से डरते हैं और इसी तरह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला से भी डरते हैं, तो जो जिन्नों का इलाज करते हैं तो वो कहते हैं भी तुम कसम उठाओ कि दोबारा नहीं आओगे, तो वो इतनी जल्दी कसम उठाने के लिए तैयार नहीं होता, पर फिर वो आखिर मान जाता है तो फिर वापस नहीं आता. तो ये जो होता है मामला, तो ये वो हस्ती से डरता है तो उस वजह से होता है. लेकिन असल जो कसम होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात और उसकी सिफात की होती है. अंबिया किराम की भी, औलिया किराम की भी लोग कहते हैं मुझे मेरी माँ की कसम है, मुझे तुम्हारी कसम है, तो ये कसम कोई शरई so नहीं. It is also cleared in this thing that if anyone has anything, or we have discussed also in the previous silsila, that it is the jinn who is in the body, not if he or she says that I am Ghaus Azam or I am Khaja Muinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah. So they are jinns which are inside the body. Yeah, jinn, they like a spirit. Okay. They like steam. Okay. And whether this spirit is good and evil, both, or evil only? No, evil. The good ones, they would not do the wrong thing. Wrong thing. Okay. Okay. They. Today it is also mentioned in our that good don't do harm anything, but they said ये इसके ऊपर हाथ है इसका. हाथ है इसका. No, हमारे नाज़रीन भी समझ रहे होंगे. That's Ameline. They make their own language, and there are too many names for these things in every culture. Okay. You touch any language, they will have 10 names, different names for these things, because it's something that's not visible. So people guess and they make stories, and they excite people, because of the stories of these unseen things. Okay. So in every nation, religion, culture, custom, civilization, there are different names for these things. Okay. Hazrat Allama Mahmud Alusi Baghdadi Rahmatullah Ta'ala, he writes that sometimes these jinns, they come as a steam and they control the senses of a human being, and when they control the senses, then the person is not sensible anymore, and that khabis ruh, that evil spirit, evil ruh, it interferes in the mind and in the body of the person and speaks from him, from his tongue, and holds things, runs, but that person doesn't know what is happening. Sometimes it's very strange, if woman suddenly will start speaking in the voice of a man. Yes. We have experienced that. Yes. And they would start speaking language that they could never speak. Okay. In their lives. They don't even know what is that language. Yes. Now imagine if a person got jinn here, all of a sudden he started speaking Japanese. Okay. And he does not even know ABCD of Japanese language or Russian language or German language. But all of a sudden this person is speaking. So that actually there's a Russian jinn or maybe German jinn. Japanese. No, Chinese jinn. Yes. So those are realities. So Hazrat Mahmud Alusi Baghdadi Rahmatullah Ta'ala says that only a stubborn person
can deny this reality. Because these things are there, we experience them day and 7 night. person who you say 7 Ziddi. Ziddi, okay. Yes. Because these are proven with mushahidat, with the general observation of people from generation to generation. Okay. So you can't just deny that. ابھی جیسے آپ نے بات مینشن کی یہ حاضری والی اور مفتی صاحب نے اس کو مزید بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ جو ہے وہ فتاوی افریقہ میں جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. صحیح. امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے بھی اکثر اوقات سننے کو ملا ہے کہ جو حاضرات کے موکل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں, تو ان سے پھر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں بھئی ہمارے جو ہے وہ گھر پہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ بیماری آئی ہوئی ہے, یہ تو آپ نے بڑی زبردست یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے گھر پر کسی نے تعویذ تو نہیں کروایا ہم سے کسی نے. اب وہ چونکہ وہ ہے ہی شیطان جن, اور اس کا کام ہی جو ہے وہ شیطانی کرنا ہے اور وہ لڑائی ڈالنا, تو وہ کہے گا ہاں بھائی تمہارے گھر میں ایک بندہ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ شین سے شروع ہوتا ہے, تو اس نے جو ہے وہ تمہارے گھر پہ معاملہ کرایا. اب دیکھا گھر میں شین کون ہے, تو وہ دیکھا کہ شین تو جو ہے وہ یہ بھابھی کا نام ہے, بھابھی کا نام ہے, بہو کا نام آ گیا, بہو کا نام آ گیا. تو اب یہ چکر شروع کیا. بہرحال اس کا یہ فرمایا کہ حاضرات کے موقع سے اس طرح کی باتیں یہ پوچھنا یہ ناجائز اور حرام ہے, اور اگر ان کے علم غیب ہونے کا اعتقاد کرے گا تو یہ کفر ہے. تو یہ ایک تو پہلی ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو, یہ غوث پاک کی روح ہے یا یہ فلانے کی یہ ہے یہ وہ ہے. اور دوسری بات, اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے تو اس کے لیے اوراد و وظائف ہیں. امیر اہل سنت کی جو مایہ ناز کتاب ہے فیضان سنت, اس کی جلد اول ہے, اس کے اندر باب ہے آداب طعام. اس کے اندر امیر اہل سنت نے مفصل طور پر جنات کی خوراک کیا کیا ہوتی ہے یہ لکھا ہے. پھر جنات کس چیز سے بھاگتے ہیں اس کو بھی مینشن کیا ہے, کس چیز سے گھبراتے ہیں اس کو بھی مینشن کیا ہے, کون سی چیز رکھیں تو جنات سے جو ہے وہ حفاظت رہ سکتی ہے. یہ بھی فیضان سنت کی جلد اول کے باب آداب طعام کے اندر لکھا ہے کہ سفید مرغ سے جو ہے وہ جنات جو ہے وہ بھاگتے ہیں. لیمبو ہے, لیمو گھر میں ہو, لیمبو گھر میں. مدنی چینل کے ناظرین بھی رکھیں لیمن ٹو کیپ لیمن ان دیئر ہاؤسز, سو انشاءاللہ جن ول ناٹ کم ان یور ہاؤس. تو پھر یہ چیزیں ہوں تو انشاءاللہ ان سے حفاظت بھی رہے گی. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اب اس سے الٹ پٹان کے سوالات جو ہے وہ نہیں کر دینے چاہیے, بلکہ جو علاج والا معاملہ ہے وہ کرنا. Anything if you share, so then afterwards inshallah we will see the Skype question. About Shaitan, people call him Lucifer, Satan, that every Muslim knows that innahu lakum aduwwun mubin, that indeed he is for you an open, a clear enemy. But how he is being promoted today, not by these people, whether they are called, you call them witches or magicians or wizards, they are normal people. Some people feel like witches and wizards, they are ugly people with warts on their noses, flying with broomsticks. Very innocently, directly and mostly indirectly, they are promoting Satanism, which is the beliefs of Shaitan, which is against obviously Allah Azza wa Jalla, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and Anbiya Alayhim Salam. Therefore, very innocently, through entertainment, they are doing this. They are psychologically programming, especially youngsters, through their dramas and their movies. A lot of supernatural movies are out there, that it's okay to drink blood, for example, to do human sacrifices, these kind of things. Because these are the things which are evil things of Shaitan. They are promoting these things. Whatever they are promoting is anti-Islamic. It's against Islam. That it is good to gamble, it is good to drink sharab and alcohol. And regarding Sulaiman alayhi salam, there is one, they call it a spell. Now, the jinns or the devils, they taught this magic to the people. And this magical spells or charms, falsely they attributed to Sulaiman alayhi salam. There is one that they call the Triangle of Solomon. Solomon is Latinized Sulaiman alayhi salam. That if you take his name and you draw a circle, you conjure spirits. As Mufti Sahib was mentioning, that these jinns are like spirits. So what spirits? You actually conjure or you call jinns and devils that come and assist you, and they have hierarchy where if you read certain, how we say wazifa, incantations, you read certain wazifas, incantations, and do certain rituals, you will get access to more powerful devils. This is what they are promoting. And if you have access to these kind of jinns or devils, you will get more powers and more blessings. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے.
और फिर हम मुसलमान हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमा दिया, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, सही, दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। ठीक, बीमारी आ गई है घर पे, परेशानी आ गई है, रिज्क में जो है वो तंगी आ गई है, तंग दस्ती आ गई है, और जो है वो कोई भी इस तरह की परेशानी किसी तरह भी आ गई है, तो बेहतरीन जरिया आपको वेपन आपके पास मौजूद है, आपका उसको इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला से यकीन के साथ दुआ मांगे, आप सारी मुश्किलें जो है वो आसान होंगी। अल्लाह ताला का फरमान है, उदऊनी यस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और दुआ बंदा मांगे कबूल ना हो ऐसा होता ही नहीं। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी मायानाज़ तस्नीफ फैज़ान सुन्नत के बाब फैज़ान रमज़ान के अंदर जो है वो रिवायत नकल की है, याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब भी दुआ मांगता है तो वो 3 चीजों से खाली नहीं होती। सही, या तो जो मांग रहा है वो मिल जाता है, या जो दुआ मांग रहा है उसको आखिरत के लिए जो है वो जखीरा करके रख दिया जाता है, और तीसरा ये है कि जो बंदा दुआ मांग रहा है वो उसको उसकी वजह से उसके गुनाह जो है वो मुआफ हो जाता है, तो दुआ बार कबूल होती है। तो सच्चे दिल के साथ खालिके कायनात की बारगाह में बंदा रजू करे, कोई भी मसला है अल्लाह ताला की बारगाह में रजू करे, तो ये शैतानियत और ये जादू, ये टूने और ये बड़ा अच्छा बताया कि ये ट्रायंगल बनाना और सर्कल बनाना और उसमें इनाम लेना और उसको कैद करना, ये बड़े आजकल इस हवाले से मतलब मामला जो और मौजूद है, जो ये फिक्शन की फिल्म्स हो गई या फिर दूसरी इस टाइप की होगी जिसके अंदर ये बताया जाता है कि वो ये बताया चैनल में वो पहुंच गया जिन आ गया, ये हकीकत के अंदर किसी ने जिन देख लेना तो इनका दम ही निकल जाए। This is taken as real also. Some of the things they believe, we would laugh at it, but they take it as real. For example, they believe in a goddess, a female god, where they say that she is the source and she gave birth to the earth, she gave birth to the skies, these kind of things. And the difference between, for example, Tawizat al-Tariya, where these are pure amulets derived from the Quran, Hadith, sayings of Awliya Allah, their rituals, their spells, as Mufti Sahib mentioned, that a lot of kufr is used. And Amir al-Sunnat Damat Barakatum al-Aliyah always encourages us to continuously renew our iman, to do Bayat Jadid. Because of these things, we don't know if we're listening to music or we're singing along or we maybe perhaps doing these spells, may Allah save us from that, maybe we are uttering kufr. Therefore, we should always renew our iman as well. परेशानी है, मुसीबत है, कुछ भी है, बंदा गौर करे कि ये आई कैसे है। सही, ये जरूरी नहीं तवीज से ही आई है, जादू से ही आई है, टूने से ही आई है, जिन से ही आई है। अपना देखे खाना जो है वो हराम है, पीना हराम है, मामला जो है वो अल्लाह की नाफरमानी वाले हैं। फिर अगर ये मामला होगा तो फिर बंदा बोले जिन आ गया है, तवीज आ गया है या जादू हो गया, तो ये actually people don't want to accept that there is something wrong with them. right. Or they don't want to believe that they can be unlucky in some situations, or they can be unsuccessful in some business venture. So they would always find a scapegoat to put the blame on that and find another person to be the culprit in this whole situation. Yes, you are right. So the problem is that people feel I'm perfect. There's nothing wrong with me. Nothing wrong can happen with me. My taqdeer, which I don't know, is written perfectly, in my favor. But it is somebody else who came and tampered with it and changed it. So it's and these people who are famous with taking out jinns and with taweez and etc. You will see around them there are always number of people, 10, 20, moving around them, circling around them. समझदार लोग चले जाते हैं In and out. I'm talking about the regular group. Now that regular group, if you talk to them, each one will say, no, I'm caught up with jinn or I'm caught up with jadoo. And so Hazrat is treating me. Hazrat treats them for a lifetime. So they he got 10, 20 khadims around him. That's his army. And that adds to... He also needs kharcha pani. How can he get kharcha pani? So he will not keep 10 to 20. 1,000 if one person... So most of these guys are
psychologically ill. Yes. And somebody needs to tell them that, look, there's nothing wrong with you. You know, you are perfectly fine. It's something that happens with everyone. Yes. And move on with your life. If the jinn is there, so what? What the jinn can do? Right. Allah subhanahu wa ta'ala has given you life. He has brought you in this dunya. He has appointed so many angels to protect you. No. So why are you worried about that jinn? What can jinn do? So if it is in your taqdeer that jinn will hurt you sometime in your life, so other accidents also happen. Yes. You don't run away from life. So face it and carry on. Do your things as a Muslim, perform your salah, read your wazaif, seek help from authentic, pious mashayikh and ulama, and you will be okay. Otherwise, you'll be caught up with these type of, professional spiritual healers. Yes. Amilin also. Yes. And they will keep you, in that circle all the time. Yes. That no, you got jinn. You got jinn. So keep on coming to me. So he got 10, 20 servants around him all the time. Yes. So that's also a situation that we observe, and it's happening in a lot of places. What about those people who, besides the Aminin, they go to people like fortune tellers and those who read crystal balls, tarot cards, these kind of People are gullible, they're not educated, they're worried about issues, more about future. yes, What will happen in future, future. they're scared, they don't know what's going to happen, and some indications. Yes. And now, because of that weakness, because of that vulnerable situation that people are in, so people take advantage. They use that situation to make money or to take other favors which ultimately amounts to money from those people. If they go to an alim-e-deen who is sincere, who is genuine, he might give them the correct advice. But they don't end up, not everyone, maybe some will go, but many will not end up going there. Many will end up going to the wrong people. And then this is where, because the pious and good are not taking the money. And they will give the right advice, they will, give them moral support. Yes. They will remove their doubts and misunderstandings and give them direction. Give them guidance that, look, don't worry about, what's going to happen tomorrow. Whatever Allah has planned would happen. Yes. As a Muslim, do the right things. Do what you're supposed to do. And leave that to Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah subhanahu wa ta'ala is supposed to do. So Allah subhanahu wa ta'ala plans your future. He plans your risk. He knows how long to keep you in this world. He planned it. So you can't take that away from Him. You can't use something and say, no, change your decision. Yes, dua and ibadat is something else. And that is because of His mercy. Because His mercy, His blessings is invoked because of ibadat and worship. Not because of tricks. Not because of, wrong and funny things that people do. And then we were talking about, people, it's a business for people. That they claim that Baba came into me, Hazrat came into me, Ghaus Pak came into me, or woman is saying that, or man is saying that. Sometimes they pretend. Because when this
starts happening, there are a lot of ignorant people who will start coming and giving you money, favors, take advice from you, and give you importance, and suddenly person feels, I was nobody. Today look at, people are around me and they take my advice as very valuable, and they also do a lot of favors to me, and if I need something, I just pick up my phone and I'll tell them I need this and I need that. They say no problem, they'll send me a check. Person suddenly feels power, money, and then even if you tell him, no, if any one of them who's listening to me right now, that when you say that horseback comes into you, you are a liar, you must be telling that no, you are a liar. I'm truthful. यानी किसी में होशपाक, यानी कोई कहे कि ये कहे कि मेरे में होशपाक आते हैं, या मैं यानी होशपाक मुझ में आते हैं, तो ये मुफ्ती साहब ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, और कहा कि हो सकता है ये आप पर वो कर रहा हो कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो याद रखिए झूठ है, ये जिन्नात करते हैं ये सारी शरारतें, और इस तरीके से मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की प्यारी बात कही है कि अगर कभी ऐसा मामला हो ही जाए जिन्नात वाला, कभी कभार ये हो जाते हैं, चूने आसेब वगैरह बिल्कुल हो जाता है, इसका बेहतरीन हाल मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया, उलमाए कामिलीन और औलियाए रब्बानीयीन के पास आ जाएं, सही, वो आपको जो है वो मशवरा देंगे, समझाएंगे, और फिर उसका हल भी इंशाल्लाह करेंगे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, आए अमीर सुन्नत के दामन को थामे, ताबीज़ात तारिया पूरी एक मजलिस है जिसका काम ये है कि ये जुन्नात, जादू, टोने, आसेब, नजर, बंदिश, ये वो सब का इलाज बिल्कुल फीस बिल्लाह जो है वो आप लोग अमीर सुन्नत के करीब भी हैं। आखिर में इस मौजू को भी शामिल करना है कि अमीर सुन्नत के क्या इस हवाले से पावर्स हैं, और ये तो सारी दुनिया में फैला हुआ जी। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट जो है वो, अगर कहीं किसी के साथ ऐसा रूहानी मसला है, दावत इस्लामी की वेबसाइट जो है उसको लॉग इन करें, dawatislami.net, वहां पर बाकायदा एक जो है वो ऑप्शन बना हुआ है रूहानी इलाज का, उसको क्लिक करें। सर्विसेज के अंदर बाकायदा एक ऑप्शन है कार्ड का, उसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीस बिल्लाह जो है वो सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएंगे जो कि सालिहीन की जो है वो फहरिस्त में नहीं आता, और चीज है, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा लेगा। अमीर सुन्नत की एक बात याद आ रही है, एक मदनी मुज़ाकरे में आप इन्हीं जो लोगों को फंसाते हैं उनकी बातें जो है वो फरमा रहे थे कि कैसे करते हैं ये। कोई छोटा बच्चा है मिसाल के तौर पर, उसको ले जाएं, वो बोलेगा ये आपका बच्चा ये गिरा था एक दफा, सीढ़ियों पर से गिरा था। बच्चे गिरते ही रहते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। अब बंदा बोले हाँ जी बाबा की बच्चा तो हमारा गिरा था, सही। फिर जो है वो बोलेंगे इसने एक मर्तबा जो है वो इसके दूध का जो फीडर था वो उसने फेंक दिया था, जी। तो बच्चा गिलास भी फेंक देता है, वो फीडर भी। इस तरह की बाग में गए थे तो जो है ना वो दरख्त के नीचे गया था, तो बाग में तो जाएंगे, दरख्त के नीचे भी जाएगा, दरख्त के नीचे गुजरेगा। तो यानी ये बातें करने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो ट्रिक्स जो है वो शैतानियां करते हैं, वो इस तरह की बातें नफ्सियाती करके लोगों को सही बजाने फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर कभी ऐसा कोई मामला हो तो औलियाए कामिलीन का दामन जो है वो थामना चाहिए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बस्ता हो जाएं, इज्तिमा पाक में आए, दुआएं करें, मदनी काफिले में सफर करें, तावीज़ात तारिया से राब्ता करें। मायूसुल इलाज जिन्हें डॉक्टर जो है वो करार दे देते हैं, वो लोग जो है वो शिफा याब हो जाते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है, सारे काम होते हैं। कई ऐसे मरीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन को सुनकर हैरत होगी, कई ऐसे मरीज आए ऐसे जिन्नात के शिकार थे, अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से भाग गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स टेक द questions on Skype. हुमायूं भाई saying अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या पहला किबला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और क्या किबले की तामीर के दौरान वो दुनिया से रुखसत हुए थे? राजा तैमूर भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ मेनी इयर्स मस्जिद अक्सा तैमूर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहजादे कितने थे? अबू मुश्ताक रहीम बख्श अत्तारी फ्रॉम साकरो। वन मोर इस्लामिक ब्रदर्स सुहेल मून भाई एट अस्सलाम वालेकुम, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, एक नात सुना दें सरकार, तवज्जो फरमाएं, फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एंड देन अगेन मुमताज अली भाई, दैट घर में जिन है तो हमें क्या करना चाहिए? सलाम, वन इस्लामिक ब्रदर हैज सेड दैट
Alaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. This is very beautiful show, recite silsila. So you also use the terminologies of this Madani Mahal and Dawat Islami. May Allah Azza wa Jal bless you all for providing us with such information to enhance our knowledge. We have a question regarding jinns and whether it is true if there is a place where there are a lot of trees, there are jinns that live there. Also, if you have a pomegranate tree, you should have a lemon tree as well. He has asked. Jazakallah khair. Ameen. This was a question from Yusuf Attari bhai from USA. Thank you, Yusuf bhai. Bint Rafiq Attariya. Salam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, mashallah, amazing sister. Is it permissible to call one spouse Jan as father of jinn named Al-Jan? Is it permissible to call one spouse Jan as father of jinn named Al-Jan? Salam, I have a question कि जब इंसानों पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब आता है तो क्या उसका इफेक्ट जिन पर भी होता है? That like zalzala came, so would the jinnat also face this? ये ना सुना दें, सुना पास से सुनापन है, सुना जहर है उठ प्यारे. Yes, Sulaiman alayhi salam did build a masjid and he passed away, his soul departed from his body while he was busy building the masjid and jinns were busy doing the work. Sulaiman alayhi salam, how many sons he had, we discussed in the last silsila that he had one son and that too was not formed fully. And do the jinns die natural death? Yes, they do die natural death. They live very long. Actually, one of the grandson of Shaitan met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him to do something, certain practices to make tawbah, because he was involved in the killing of Habil. So he was on the side of Qabil. So then he became Muslim and he regretted and he wanted to make tawbah, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Here, if we also plus this issue that everyone have jinn, or we will say that what was Hamzat. So what is our Hamzat like, and what was the Hamzat of? Okay, let's complete what we are discussing. Otherwise, there will be two things. So that tells you the age. Yes. That they live very long, but they do die. And if there are jinns, what should we do? Actually, there are a lot of wazaif to remove the jinns. You can read Ayatul Kursi, you can read 4 Quls. Also, Surah Baqarah is very good to be recited. And then there are many wazaif that you can get from Tawizat Yattariya. Not one, there may be 20 different type of wazaif. So you choose what suits you or easy for you to recite. One can do that. And if there's a pomegranate tree like anar tree, should there be a lemon tree as well? Well, it's not necessary. What is said, it's through the experience of pious people, that if you have a lemon fruit in the house, the jinns would not come. So lemon tree would not be in the house; it would be in the yard. Yes. So that's a different thing. Okay. Can a wife call her spouse Jan? Jan, what we say in subcontinent, it's in the meaning of life. Like you trust that person so much, you love that person so much, that you regard that person as your life, as your soul. It's a word that presents extreme love. So people who are, married, the husband and wife, they love each other, so they use these type of words. So that's perfectly fine, no problem with that. And then, if azab comes to the azab, like earthquakes, things like that, floods, does that affect to the jinns? Yes.
this would not affect to them Okay. because they don't have physical bodies like us. They are more like steam, like spirit. Okay. So they would not be affected by these type of things. They will have their own disasters in their own world. They have their own problems which we don't know much about. But our accidents and our disasters that we face as humans, not necessarily that it affects them as well. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا جی. جیسے ہمارے ناظرین نے جنات کے حوالے سے کافی ساری معلومات جو ہے یہ سنی, تو جیسے سوال بھی تھا کہ جن گھر میں ہوں تو کیا کریں, تو بہترین اس کا ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے حل ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایا ناز تعریف ہے مدنی پنج سورہ جو ہے وہ گھر پہ رکھیں, تو اس میں بہت سارے اوراد, بہت سارے وظائف, جادو ٹونے جنات حسد ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ درج ہے, تو وہ گھر پہ رکھیں گے اور پھر وہ کسی سنی عالم دین کو قاری کو جو ہے وہ سنا بھی دیں. اسلامی بہنیں جو مدرسۃ مینا بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان اوراد کو سنائیں اور پھر اس کے بعد ان کا معمول بنائیں, تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. اب آئیے کچھ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین ناراض نہ ہو جائیں جنہوں نے یہ کالز کی ہیں, کچھ نعتوں کے لیے ہر ایک کے 2-3 جتنے یاد ہیں انشاءاللہ تعالی سنا دیں, تاکہ اور آخر میں کچھ بات اس پہ کرنی ہے کہ امیر علیہ سنت اس وقت ماشاءاللہ یہ سمجھے کہ بقیت السلف شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کا فیض جاری کیا ہے. آپ حضرات قرب میں رہتے ہیں, کبھی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسے معاملات, کوئی ایسی بہار یہ ہوئی ہو تو اس کے متعلق سوچ کے رکھیے, تو مدنی چینل کے ناظرین کو اس سے بھی شیئر کریں کہ ہمارے شیخ طریقت کا ان پر بھی کتنا فیضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, بلاوا مجھے دربار نبی سے, کاشا بلاوا مجھے دربار نبی سے. تو مشرف مجھے دیدار نبی سے, فرماد مشرف مجھے دیدار نبی سے. اور اللہ کو مانے جو محمد کو نہ مانے, اللہ کو مانے جو محمد کو نہ مانے, ناری ہوا انکار نبی سے, نعرہ
کا بھی سے اے زائر طیبہ یہ دعا کہ میرے حق میں بلاوا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. آئیے ایک اور استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در تو دست پہ گدا حاضر ہے در تو دست پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن میں جاؤں کا پڑھ کے میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن میں جاؤں کا پڑھ کے آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. Few minutes remaining in ending of our silsila. Some questions we have also got on Skype. That Tanveer Bhai has asked, Assalamu alaikum. My name is Tanveer Hussain Attari. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. From Kenya, Nairobi. My question, can you tell me the name of jinn in English? And I request to Nath for Amir al-Sunnat. Okay. So the Nath you present
Before it was the kalam of Amir al-Sunnat. Mazhar Bhatt bhai, again the salam, जिन्नात से हिफाजत का वजीफा बता दें. Hello मदनी चैनल अमीर सुन्नत एंड दावत इस्लाम. थैंक यू माशाल्लाह. आपका प्रोग्राम अल्लाह वालों की बातें बहुत अच्छा है. इस सिलसिले को आप उर्दू जबान में भी दीजिए. ये मामला ये कि दिस इज द सिलसिला फॉर Islamic brothers living in South Africa, UK, and we also translate in it in Urdu. Summarize हो ही जाता है तकरीबन, तो फिर भी एक तादाद है जो वो है मतलब ये इंग्लिश सिलसिला इसमें ज़ाहिर बात है गुफ्तगू भी है तो मजलिस इंशाल्लाह उम्मीद करम फरमाए तो उर्दू वालों को भी अता फरमाए. उर्दू वालों को भी अब ये कि अगर इस पर इतना है तो ठीक है, अल्लाह वालों की बात है. उर्दू में भी इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला खैर फरमाए, आसान फरमाए. जी क्या फरमाते हैं हुजूर? What do you say about these questions and the question, the English name is Genie. Genie. Yeah, Genie. G-E-N-I-E. Okay. So that is the English name for Okay. jinn. जिन्नात से हिफाजत का तरीका तो ये तो था विजाते तारिया वाले जो है वो बताएंगे. तो जो है बरल हम इतना ही रस्सा बताए देते हैं. मदनी चैनल के नाज़रीन खुद जो है वो पहुंच सकते हैं कि वेबसाइट जो है उसको लॉग ऑन करें. बुक्स का जो उसमें ऑप्शन है लाइब्रेरी का, उसको जो है वो खोलें. मदनी पैसूरा जो है वो अपने पास डाउनलोड करें. उसमें सारे रूहानी इलाज अमीर सुन्नत में काफी सारे अता फरमाए. दूसरे के एक किसी पीर साहब से मुरीद भी हो जाना इसमें बेहतर है. आप अगर कोई ऐसा मामला है तो अमीर सुन्नत से मुरीद भी करवा सकते हैं. इंशाल्लाह आप इसका खुद भी असर देखेंगे. और जो शजरा शरीफ है इसकी पढ़ने की भी ये बरकत है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो ये नहीं आएंगे करीब. और एक तो अमीर सुन्नत का वाकया याद है ना कि एक जाना नहीं वो जा रहा था और उसके ऊपर अचानक उसकी गाड़ी के ऊपर वजन आ गया. जब वो गाड़ी से उतरा तो उसके सीने पर उसके कंधे पर वजन आ गया. फिर सारी रात वो परेशान रहा. अगले दिन इस्लामी में मिले, उन्होंने बताया तावीज़ात अत्तारिया पे चले जाएं. ये बाहर मौजूद है तावीज़ात अत्तारिया की. वो शजरा शरीफ दिया वो रखा. अब उस दिन वो बला उसके सीने पर आकर बैठी नहीं बल्कि बाहर से उसे देखती रही और उसे वो कहती रही ये जो शजरा ने हटा दो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी. उसने हटाया नहीं और आखिरकार ये हुआ कि वो उससे उसकी जान ये छूट गई. Alhamdulillah, we experienced many times. In South Africa, when people had this type of problems, maybe, in the middle of the night, they don't know where to go. Yes. There are not many ulama or scholars, living there. So they will come, anytime and they'll say, please help us, we're in trouble. Yes. And this I've experienced many times. I'm not an amil. Yes. I don't know how to take out jinns. I never learned that. But when people are there and they're desperate and they want help, so you start doing something. So normally I would start reading, Nadi Ali, and then Shajara Attariya. And Alhamdulillah, the jinns will leave. They make hazari, they trouble a little bit here and there, and then they'll tell you, please stop reading, I want to go away, I want to leave, let me go. So this is the effect that I've observed and I've seen. And it happened not once or twice, it happened many times. So Alhamdulillah, the barakat of, Shajara Attariya, it's Ala Hazrat Shajara, it's a horse park Shajara, the barakah, the beneficence, the fairs of all these great Buzurgan Deen, you find it in this Shajara, in this Silsila. And many people, they're caught up with jinns and jadus. Our brothers in South Africa normally, they advise that if you're not bayat of any Pir or Murshid, take bayat with Amir al-Sunnah. And they do that, and Alhamdulillah, jinns leave them. Because they see that now this person is connected, with strong people. This person got strong backing now. So we can't, carry on, bullying him around or torturing him. So they also see that now he got some guards, behind it. So people that are suffering with these type of things, it's also good for them to take bath with such personality,
in this age and time, Yes. this type of personalities are very rare. Yes. Yes. And then not many actually. Allah. So it's an opportunity that people should not delay in this process and take bayat with the Amir Ahl Sunnah and protect their physical bodies from ailments, jinns, jadus, and their faith, their iman, and protect their akhirah as well. Subhan. Asim Mahmood Bhai has also done a message from Norway. Salam, walaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, very nice silsila. May Allah Azza wa Jal shower His blessings upon you and give much more blessings in the ilm of Mufti Sahib. Mufti Sahib is the message for you. Ameen. Jazakallah. Thank you very much. Yeah, yes, anything regarding issues? Many people want instant gratification. That is, they want to fulfill their lust and their carnal desires, their nafs immediately. Yes. And for this purpose, they will go to, for example, imposters or fake aminin or na'udhu 14 tellers, these kind of people Yes. who are instructed by jinnah to try and get whatever they desire. And Satanists, those who follow shaitan, they even have this belief that you must leave your religion, whatever it is, because religion is only there to control you and to keep you trapped in a grid or in a box. And rather, they tell you, you rather follow this religion of the witchcraft, or Wiccans, or there's different names out there. And very, very innocently, how they promote this is that they are there to promote feminism. Because they believe, as mentioned earlier, they believe in this female goddess, Yes. even a horned god, which is represented with the head of a goat. So they say that this is the only spiritual tradition, this witchcraft, which promotes, which believes or which worships a female god, and compared, according to them, compared to some religions out there which they venerate and they worship a male god, so there's more emphasis on respecting females in their religion. So alhamdulillah, in Islam, if you look at the name of Allah, it is not masculine, it is not feminine. The true equality lies, Islam is the fastest growing religion in the world. Islam is growing so fast that they are wondering how this is happening. For example, in the UK, in the last few years, 100,000 reverts that have come to Islam, and most of them were women, or are women. No. Because they are tired of consumerism, they are tired of immorality that is being portrayed by the media. And they find solace, they find peace in Islam. And they are covering up. They are putting their veils, they are putting their scarves, they are putting their dresses according to Islam. Our Islamic sisters, our Islamic brothers must take a warning from this. That you Muslims, they are practicing their deen. What about us who are born Muslims? What is our duty? Sometimes some things are present in our house and disappears, then it comes again. So whether these devils or jinns are in our home also, क्या कहते हैं? जिन्नात कर देते हैं चीजें गायब. इसीलिए अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जो माया नाज तसनीफ है फैजान सुन्नत, उसका जो पहला बाब है फैजान बिस्मिल्लाह, उसके अंदर जो है वो इरशाद फरमाया है. बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से काफी मुफस्सल मदनी फूल है. उनमें ये भी है कि जब बंदा कपड़े उतार कर रखे तो तय कर, मदनी इनामात में से एक मदनी इनाम भी है कि तय करके जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखे ताकि उनको जिन्नात जो है वो इस्तेमाल न करें. घर से जब निकले तो दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ें. Also we also have question regarding marriage. Can a man marry a female jinni? Well, it's not allowed, Yes. but it did happen. We also discussed in the previous. Yes, that the mother of Bilqis Yes. was Jinniya. Her father was human being, king, and the mother was Jinniya, and she was born out of that. Allahu Akbar. So that's in Hadith Mubarak. That's Hadith Mubarak. मीठे मीठे But इस्लामी भाई. it's not allowed in our Sharia. ओके सही. मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस मौजू पर गुफ्तगू हुई, जिन्नात के मौजू पर गुफ्तगू हुई. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा नए मौजूआत के साथ हाजिर होंगे. मदनी चैनल देखते रहिए, इसकी बरकतों को पाइए और खूब खूब इससे फैज़याब हो जाइए. जिनों से हमें डरने का नहीं है, बल्कि जिनको हम जो है ना वो समझे कि
डरा के जो है ना वो भगा दें। मगर यही है कि अमाल अगर अच्छे नहीं होंगे ना, नमाजें छोड़ना करना, बुरी चीजें करना, नापाक रहना, Jinns like, especially these shayateen jinn, napak jinn, yes, they like filth, They नापाकी, dirty things. dirty things. And they normally near that place where Yeah. there is dirt, where there is filth. That's why, when we enter the house, we don't say, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Yes. When we enter the shop, we don't make that dua. Yes. Why do we make that dua only when we enter the toilet? Yes. Because toilet is a place where you discharge filth. It's a filthy, smelly, bad place. Yes. And that's where they are. So you make dua because you are going to open up your sitr in front of them. And one who recites the dua, what yes, he's protected. Then they can't come and see you. They can't interfere with you. So similarly, people who don't make ghusl, they stay napak in the state of janabat. Ghusl is farz upon them and they did not perform ghusl for a long time. They can be attacked by jinns very quickly. And The women, see, that's the reason most of the time women become victim of jinns. Yes. Because they have that period, so they are in the state of impurity. But there are other ways that they should adopt to keep the jinns away, like reading Durood-e-Pak, reading other wazaif. It doesn't mean that you can't perform namaz, you can't do other ibadats. There are many ibadats which are permitted. So keep yourself engaged in zikrullah, so these shayateen cannot be attracted towards you. No. So this is a basic principle. I've heard from a great alim-e-deen who's a Khalifa of Hazur Mufti Azam Hind Rahmatullahi Ta'ala, that when some people came to him and they said, we got jinn and jadoo problem, instead of giving them taweez, he taught them how to do ghusl properly. No. And then he said, because these people don't know how to do ghusl properly, they stay napak. No. And when they stay napak, jinns come and capture them because they like napaki. No. They like impurity. So, if they know how to stay pak, we are treating the root cause. We are treating the foundation of the problem. Yes. The root of the problem. This is very vital issue that every viewer of Madani channel must take note of. Girl or boy, man or woman, there are times when we are impure. Yes. We must learn how to make ourselves pure. We must learn how to make ghusl. Women especially, our sisters, they must take extra precautions. Yes. In the matters of paki and napaki. कुर्ब की बात हुई अमीर सुन्नत के कुर्ब की, अल्लाह करे हमें भी नसीब हो जाए। मुफ्ती साहब किबला को बड़ी बरकतें मिलती रहती हैं, यहाँ से रहते हैं, तो एक मदनी चैनल के नाजरीन भी कुर्ब हासिल कर सकते हैं। अमीर सुन्नत से जो है वो सुना गया है कि जो जितना मदनी काम ज्यादा करता है वो उतना मेरे ज्यादा जो है करीब है। क्या बात। मदनी काफिलों में जहाँ भी है, मदनी काफिलों में सफर करते रहे, मेरे सुन्नत की सोहबत से फैज आपके मदनी मुज़ाकरे सुन के जो है वो उठाते हैं, तो इसकी बरकतें इंशाल्लाह कुर्ब पाते ही रहेंगे। मदनी काफिलों में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला गुस्ल वुजू ये सब चीजें सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो चीजें दीन ने बताई हैं इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे तो इनके शर से इंशाल्लाह ताला आप महफूज रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बातें हमारी काफी सैर हासिल हुई। अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला इखलास दे दे और बस अल्लाह कबूल कर ले। हमारी इस हाजिरी को, हमारी इन बातों को अमल भी दे दे कि जैसा जाहिर है अल्लाह करे ऐसा ही इससे बढ़कर हमारा बातिन बन जाए। और ये यकीनन किसी शेख तरीकत, किसी पीर कामिल की निगाह ही से ये बन सकता है, वरना सच्ची बात तो ये कि बड़ा हाल हमारा बिगड़ा हुआ है। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इखलास दे। आना मदनी चैनल पर ये बातें करना मुश्किल बड़ा मुश्किल है। बस अल्लाह ताला कबूल कर ले और इस्तिकामत दे दे और
اچھی نیتیں اس میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نئے موضوع کے ساتھ نئی ڈسکشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, لطف میری جان کو سوزو گداز کا